house rule and welcome before moving on to the topic for today. So, for most of you probably know me by now. I'm Danish Bhatti. I'm chair of APPNA Merit for 2022 and 21, and I'm the along with my co-chair Dr. Shahid Rafiq. I'm a movement disorders neurologist. Now I'm at University of Central Florida. You can see the boxes behind me. I'm still unpacking and relocating to Florida in Orlando, and I'm taking on some roles here at University of Central Florida in Orlando, VA. And as you know, APPNA Merit has started these webinars on healthcare innovation and entrepreneurship with a goal to support technology transfer to Pakistan as its namesake, Merit, which stands for Medical Education, Research and Information and Technology Transfer. And with these webinars, we want to learn about healthcare innovation and entrepreneurship in Pakistan and also share that information with you. And as I've mentioned a few times before, last year we were planning to do these meetings one-on-one on our own, but we thought we should make this as a public event for other people to also join and learn with us and the same things that we are learning and see all the exciting things happening in Pakistan in healthcare, in innovation and entrepreneur. So every week since last year, almost 45 weeks now, 50 weeks, we have been inviting different founders, entrepreneurs, researchers, innovators, mostly from Pakistan, but also some Pakistani diaspora from Europe and also from US to try to showcase for us the work they're doing so that we can connect with them, network with them, introduce you guys to them, and give any suggestions or thoughts, and then try to help along as we can. So this is basically kind of a platform. Anybody presenting here is that is not these are just learning opportunities and enhancing our understanding, and these are not validation from APPNA or APPNA Merit, no endorsement or promotion of any particular individual or organization. We want to help all of them. And we want to support all of them, and we do not charge any fees. We do not charge any time. Everybody's volunteering here, and this is just a learning activity. So of course, there are many industry experts who come on these platforms to talk about the work they do. So there's huge conflicts involved. So this full disclosure, everybody always talk about all their relationship, and we are always open about all our relationship. And in the past and hopefully in the future. So we used to offer CME for these events, but we're currently not offering any CME for these activities anymore, so that we have less restrictions on who we can bring on these platforms. But we are offering a certificate of participation because we do think these are huge learning opportunities to all of you. Our audience are the future of healthcare in Pakistan, so we want you to come and learn and also get a certificate of participation. So APPNA Merit will be issuing a certificate of participation. As I pointed out before, these are in partnership with two organizations. One is called Tajdeed, which is a healthcare innovation or revival of innovation, a group of us who are wanting to invest our time and money in Pakistan to revive the healthcare and play our part through these technology, deflationary technologies, bringing healthcare to more and more of the people at more cost-effective level, and also in partnership with the newly founded American Academy of Preferred Providers, who we are partnering with. These webinars are recorded and available on our YouTube channel. I also invite all of you to introduce yourself in the chat group and also reach out to us on appnamerit@gmail.com with networking with any of our speakers or recommendation for panelists or speakers for a future event. We look through all those recommendations and try to follow as many as we can within some of our constraints and limitations. We also encourage you to ask your questions for the speaker for today in Q&A, and raise your hand if you have time. We'll try to circle around and back to you. So as usual, our session will be with an invited speaker for 45 minutes of presentation, and then we'll have 15 to 30 minutes of discussion with them, with our panelists. Our co-chairs are present here, and also from the audience, anybody can raise their hand. We can loop them into the conversation for any questions or discussion. So with that, let me focus and shift gear and focus on to our speaker for today. We have a very unique speaker for today, a true entrepreneur,
and an expert in business management, Yasir Bucha Saab. Me and Dr. Shahid had our pleasure of meeting Yasir Saab in 2017, I believe, in Orlando, or 2019, way back. And we were really impressed by the enthusiasm Yasir Saab had for improving healthcare in Pakistan, but at a high quality and in a high innovation. So not just building another brick building, but bringing something which is a complete innovative and a high class, high quality experience in Pakistan. Yasir Saab have diversified experience in strategic project management, so something that none of us have in healthcare. And he is also expert in resource and budget management, implementation of real estate and development projects. So someone we really need to partner with because brick and mortar is where the healthcare get practiced, and we need those spaces. So he has been always on forefront of the modern trends in wanting to implement information technology and new modern services in his projects. And I'm so glad that he focused on creating an international high quality hospital, the Buch International Hospital, which is now up and running, I believe. And he has also many other previous projects unrelated to healthcare, but similar in e-commerce and in development in terms of real estate and property in the past under his belt. So I'm looking forward to hearing from Yasir Bucha Saab. What are the technological challenges on bringing hospitals to the country, bringing innovative practices and services? What new models he has explored that could be used in future? How can he partner with us? We can partner with him in bringing our role into healthcare in Pakistan. What models he have tried, and I look forward to his presentation. So with that, let me invite Yasir Saab to go ahead and start with his presentation. Right, Ji, thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all. Danish, I would like to ask you something. Would you want me to continue with my presentation in English, or because I presume that the audience is primarily Pakistani backed, so should it be more in Urdu or English or mix, or how would you want it to go? Urdu will be fine. जैसे आपने कहा, हमारी audience primarily Pakistani, even अगर वो बाहर भी बैठे, we're all Pakistanis. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. So I'll start. So I presume, जब हमारी discussion हुई, तो the idea was कि just to share my journey, how I ended up in healthcare and what challenges did I face. So I would like to share those. A little bit about myself. I am from Multan. I was born in Multan and I did my FSc from Multan. After my FSc, I got the opportunity to get admitted to Ghulam Ishaq Khan Institute, GIK, for engineering. I'm interestingly from the first batch. So after my engineering, I worked in Karachi for 1 year with Artel Group. And after that, I went to UK and did my master's in business administration with majors in MIS. I came back, I worked with WorldCall, PwC Consulting UK, Techlogics, and Mobilink. My last job was in Mobilink. I was heading their IT operations nationwide, and I was at a position of a director over there. Coincidentally, my father retired in the same duration, and he went back to Multan. My father is a pilot. He has served PIA for 38 years. He was the PELPA president for the last 9 years of his tenure. So he came back and he thought that in Multan, there is a scarce of gated community. Unfortunately, Multan के अंदर एक रिहायशी proper gated community का रुझान नहीं था उस वक्त. So he thought कि why not, build a housing community. So हमारा जो आबाई ज़मीन थी, उसके ऊपर we started building a project. And my father called me and he said that I might as well join him, and I wanted to join him, so I moved back to Multan. And since 2011, I am primarily based in Multan. So I am by profession an engineer and an IT enthusiast and business development and business administration student. I never ever thought that I'll go into healthcare. I started the real estate project, started doing it as a project management. While I was in Mobilink, people from IT background were reporting to me, and there was a completely different domain over there. But when I came back to Multan, I started facing new things and learning new things. मुझे इससे पहले नहीं पता था कि ज़मीन जो है वो खसरा खतूनी के अंदर डिवाइडेड होती है. उसके अलावा
पटवारी किस तरह जमीन को समझता है, और ठेकेदार क्या करता है, और मिस्त्री क्या करता है, और साल क्या होता है, और जो आपका 1 2 4 का मिक्सचर है, 1 4 8 का मिक्सचर है. सो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल दोज थिंग्स टुवर्ड्स रियल एस्टेट डेवलपमेंट. So I built 450 houses over there, and then we started doing some commercial projects. I built a commercial mall जिसके अंदर cinemas हैं, food court है, and there are shops, location for shops available over there. Then we developed a community center with a marquee. We also developed under this ambit, we developed certain plazas with shops in the bottom जहाँ पे हमारे पास इस वक्त banks आए हैं, और plazas on the apartments on the top in the plaza. Then we built sports complex as well. हमारे पास जब आप एक स्पेसिफिक साइज से बड़ी हाउसिंग स्कीम बनाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास एक जगह होती है जिसको को आपने हेल्थ केयर के लिए मुख्तस करना होता है. सो हमने भी वो जगह मुख्तस की हुई थी, एंड वी वर ऑफ द ओपिनियन कि some doctors will come and they'll probably want to build a hospital over there. So we had certain doctors coming over, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, डिफरेंट लेवल पे डिस्कशंस हुई, बट हमें फीलिंग ये आई कि हम जिस तरह का क्वालिटी का काम करना चाह रहे हैं शायद वो इस तरह नहीं हो पाएगा. So we thought, okay, why not explore this business? So I started studying the healthcare business, and for 2 years I spent my time into designing कि healthcare project किस तरह बनना चाहिए, उसकी requirement क्या होती हैं, patient flow की कितनी importance है, contamination flow की कितनी importance है. While I was doing that, so I realized कि I should go not into a project phenomena, I should go into a product phenomena. I should build a product that can be replicated later on into a chain of hospitals. Then while I was studying this, I came across the medical tourism side, the medical concierge side. I came across the hub and spoke model. So I made sure that our hospital is designed in such a manner that everything can be plugged into it. So alhamdulillah, this year we have finally launched our project. We have started with the OPD facility. Over there we have started with radiology, pathology, pharmacy, and OPD clinics. Very soon, inshallah, we'll be starting off with the emergency and certain patient rooms with ICU as well as operation theaters. So this is the sort of thing that we intend to build. Now, coming from a non-medical background, this was a big challenge for me to build a healthcare facility. Because first of all, I had to learn a lot of things, and then I had to unlearn a lot of things. बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मार्केट के अंदर जो कि एक नॉर्म बन चुका है, जो कि एक फिनोमेना बन चुका है, जिससे कि तमाम लोग उसी लिहाज से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट शेयर विद यू my personal experience. Unfortunately, my mother got cancer and she passed away after 1.5 years of rigorous treatments. She had a very tough time. So during that process, I learned that whichever hospital did I go, and I went to UK as well and Pakistani hospitals as well, Shaukat Khanam as well. They are very good facilities and everything. But I just realized that wherever you go, the first thing that hits you as a carer is depression as soon as you enter into a hospital. There is a specific smell that comes to you. There is a specific enclosed area that actually gets over you. So मुझे ये था कि यार जब भी कोई इस तरह की हेल्थ केयर की चीज बनानी है तो उसके अंदर हमने ना सिर्फ पेशेंट के बारे में सोचना है, हमने उसके साथ वाले केयर के बारे में भी सोचना है और हमने अपने स्टाफ के बारे में भी सोचना है. So based on that, we started building our vision, and in our vision we are very clear कि हमने बेसिकली एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस करनी है जिसके अंदर हम पेशेंट पे, केयर पे और स्टाफ पे फोकस करेंगे. So based on that, we started working on every dimension. Then as an individual, I realized in my life that there is always a purpose that everybody has. So I started finding out what is my purpose of life. And I wanted to align that with my healthcare project and everything that I do in my life. So far what I've understood is that my purpose is to create convenience for people. So whatever I do, I make sure that I try to put convenience there so that even if the patient is there or the carer is there or our staff is there, their process should be convenient. So me coming from the IT background, I make sure that when we do deal with our HMIS information systems, we make sure that there are as less clicks as possible, as less interaction with the computer of the doctor, because doctor का concentration patient की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, ना कि computer की तरफ ज़्यादा होना चाहिए.
क्योंकि कंप्यूटर वक्त की जरूरत है और हमें मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम पे जाना है. वी आर डूइंग दैट, बट वी आर मेकिंग श्योर कि टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बीच में प्लग इन करें कि हमें इस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना ना हो और हम कन्वीनियंटली इन चीज़ों को सॉल्व करें. सो बेस्ड ऑन दिस जर्नी वी फाइनली स्टार्टेड बिल्डिंग आवर हॉस्पिटल. हमने शुरू किया और ड्यूरिंग दैट टाइम आई विजिटेड, शुरू करने से पहले आई विजिटेड एप्स यूके, जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कम्युनिटी है यूके में, एंड आई विजिटेड अपना इन ऑरलैंडो. वहाँ पे जाके डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हुई एंड आई शेयर्ड माई ड्रीम दैट व्हाट आई वांट टू बिल्ड. What I remember is that everybody in UK and USA appreciated that somebody is thinking on these lines. But honestly speaking, मुझे किसी में भी वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया कि मैं बना पाऊंगा. And I think that was a very good thing because that actually kept me going. And अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है कि जैसा सोचा था, जैसा विजुअली दिखाया था, जैसा 3D में प्रेजेंट किया था, उस तरह की हमने चीज़ बना ली है. But this is just 30% of what I want to do. Building is just a 30% part. उसके बाद जो उसके अंदर सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स को किस तरह इंटीग्रेट करना है और उससे इवेंचुअली कन्वीनियंस किस तरह क्रिएट करनी है, दैट्स द मेजर पार्ट. So now we are entering that phase, and inshallah, with the help of many professionals, with the help of organizations like APPNA and Apps UK and many other organizations, I'm really looking forward to guidance from all these places. What we did was, while designing the hospital, we procured FGI guidelines for building healthcare management, and we procured some JCI documentation, so that even if we are not going for JCI from day one, we wanted to establish a facility that is JCI enabled, at least, so that there are certain standards जिनके ऊपर हम काम करें. हमने अपनी बिल्डिंग को पंजाब का एक डिपार्टमेंट है पीका के नाम से, जो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, और उनके साथ हमने एक MOU किया, एंड विद गिज जर्मनी वी गॉट आवर बिल्डिंग वेटेड एज अ ग्रीन बिल्डिंग. और उनकी रिकमेंडेशन की बेस पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड की. When I entered into healthcare, मुझे उससे पहले बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, and I'll share with you उनमें से मोटी-मोटी चीजें क्या हैं. For example, well baby nursery or sick baby nursery should not be close. They should at least be one floor apart. So this is a standard practice. This is an international standard जिसके ऊपर वर्क किया जाता है. मुझे इससे पहले ये बात नहीं पता थी, बिकॉज मैंने जितने भी हॉस्पिटल्स देखे हैं, मैंने अनफॉर्चुनेटली वेल बेबी और सिक बेबी को एक ही कमरे में देखा है. सो आई थॉट कि यार इस चीज को हमें डेफिनेटली करना चाहिए. देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि जहां जहां मैंने देखा है, शायद मुझे पता नहीं था कि उनकी सिक बेबी नर्सरी अलग भी है, बट एटलीस्ट मेरा मुशाहिदा यही था कि वो चीजें एक जगह पे हैं. सेकेंडली, मुझे बहुत सारी जगहों पे डर्टी कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा. मैंने अक्सर देखा है कि एक वार्ड बॉय होता है जो एक बड़ी सी परात को लेके, जिसपे ग्रीन कपड़ा होता है, या वो लेकर जा रहा होता है, ये एक ट्रॉली होती है जिसके ऊपर एक ग्रीन कपड़ा होता है और लेके जा रहा होता है, और वो स्टेरिलाइजेशन के लिए उसको लेके जा रहे होते हैं, और वो पब्लिक के बीच में से गुजर रहे होते हैं. आई अंडरस्टूड कि दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ इनक्लोजिंग कंटामिनेशन. देन आई लर्नड कि जो आपके ओटीज होते हैं उसके अंदर लेमिनार फ्लो के लिए, टू अवॉइड कंटामिनेशन, आपके ओटीज का बिल्डिंग का AHU ही अलग होता है. While going into this, and because I'm a mechanical engineer as well, so when I studied this, so I thought that let's go one step ahead. तो हमने, हमारे पास 8 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, हमने हर OT का अलग AHU कर दिया, ताकि एक AHU की एयर भी दूसरे OT के साथ मिक्स ना हो. So things like that. For example, एक जहन में आम शख्स के तौर पे, एक लेमैन के तौर पे जहन में ये आता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एक पेशेंट जब एडमिट हो जाता है तो उसको कमरे में ही रखते हैं. 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, बिकॉज उनकी साइकी ये होती है कि जी चलो मरीज आया हुआ है, कुछ दिन और रह जाएगा तो हमें ज्यादा कमाई दे जाएगा. बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट व्हाट हैपेंस. हॉस्पिटल्स अंडरस्टैंड दिस कि पेशेंट का एक वक्त से ज्यादा देर रहना उस पेशेंट की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज वो कंटामिनेशन की एक्सपोज एनवायरनमेंट में है. दूसरी चीज ये है कि आपका जो पेशेंट रूम होता है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ रेवेन्यू सेंटर, इट इज अ कॉस्ट सेंटर. After 3 to 4 days, it becomes a cost center. So आपको बेड मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करना होता है, so that you ensure कि आपका जो पेशेंट है वो कंटेमिनेशन से पाक रहे, और अगर उसको किसी किस्म की फर्दर हेल्थ केयर की जरूरत है तो उसको ICU में या CCU के अंदर मूव किया जाए. अननेसेसरीली किसी पेशेंट को एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए. So these are the things that I learned with the passage of time. There are many other things that we are trying to learn. For example,
पंजाब में अगर किसी को रात को हार्ट अटैक हो जाए तो देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर यू कैन गो एंड दैट इज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी. मुल्तान के अंदर देयर इज ओनली वन प्लेस दैट इज कॉल्ड मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी. मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि कौन अच्छा काम करता है या कौन बुरा करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है. सो वी आर थिंकिंग कि हम अपनी कार्डिक फैसिलिटी को 24 आवर्स कम से कम इस तरह इनेबल ज़रूर करेंगे, बिकॉज यू आर डॉक्टर्स एंड यू अंडरस्टैंड बेटर देन मी कि कार्डिक इम्पैक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर मैनेज हो जाए तो रिवर्स हो सकता है, उसके बाद रिवर्स नहीं हो सकता. सो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स वी थॉट कि यार इन चीज़ों को जहन में रखा जाए. We have also encapsulated the future demands in our design. हमने अपने हॉस्पिटल को एयर एम्बुलेंस कैपेबल भी किया है. हमारा एक हेलीपैड है जो हमारे रूफ टॉप पे हमने बनाया है. अभी तक हमें उसका सिविल एविएशन से और मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिला, बट हमने अपना सारा का सारा स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिया है कि जिस दिन हमें अप्रूवल मिलेगा और जिस दिन गवर्नमेंट इस किस्म की चीज़ें अलाउ करेगी तो हम प्री फैब्रिकेटेड हेलीपैड उसके ऊपर प्लेस कर देंगे. सो हमारे पास एक फैसिलिटी हो जाएगी, बिकॉज ट्रैफिक और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो चुके हैं जहां तक लोग एम्बुलेंस से टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल में. सो केटरिंग फॉर दैट. सो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं कि हेल्थ केयर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वी ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि उन प्रॉब्लम को फेस करें और उसको कन्वर्ट करें एक कन्वीनियंट सोल्यूशन के अंदर. So based on all these things, Alhamdulillah, we have developed a project. So I would just like to share something with you कि हमने अभी तक जो बनाया है उसका छोटा सा जर्नी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा. So I'll be playing a video over here. I presume you guys can see this video. शेयर करते हुए यासिर साहब, शेयरिंग में ऑप्शन होती है टू ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप एंड साउंड, वो प्लीज कर दीजिएगा सो इट प्लेज मोर स्मूथली. Just तो let me शेयरिंग ऑप्शन में आपके आ जाए. and आप kindly मुझे बताइएगा if you can see this. This is how we started. So this was just a glimpse of what we have built and how this whole thing started. So just to give you a little overview of how this thing looks from inside and what sort of facilities are there. For example, हमने अपने hospital में pneumatic tube system को भी introduce किया है, so that जो medications हैं और lab tests हैं वो tubes के through different sections में they pass through. Danish, can you confirm if the video was fine? थोड़ी सी स्लो चल रही थी और साउंड इतनी अच्छी नहीं आ रही थी. अगर तो खाली म्यूजिक है देन विल बी ओके. Sound though it was just the music, nothing देन else. इट्स फाइन. Okay. So let me show you another clip of how it looks from outside and inside now.
So this is how the project looks from inside. I'm not sure if the images were clear for you or not. So just to show you a glimpse of what the building looks like. This is the cafe that we have at the entrance. This is a deluxe room that we have, a patient room. This is the corridor for the patient rooms. This is the entrance, जहाँ पे हमारा reception area है. This is the snap of emergency. We have 19 beds over there, and we have a peds emergency separate from this. This is the diagnostic area, में जो waiting area है वो है. This is the prayer area. This is again diagnostic waiting area. This is the MRI, open MRI. This is the CT scan, 160 slices that we have. This is the cafeteria. We have a kitchen, जिसमें कि एक न्यूट्रिशन किचन का पार्ट भी है. सो हमारा जो भी पेशेंट्स होंगे उनकी जो फूड होगी वो उसके कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट के बाहमी मुशावरत से उनको बेसिकली सर्व किया जाएगा फूड को. These are the OPD clinics. उनके different bays हैं. ये OPD area का sitting area है. This is how a clinic looks from inside, OPD clinic, and we have used antimicrobial coating curtains wherever they are required. So contamination और patient flow को हमने primarily बहुत ज़्यादा focus किया है. आपको pneumatic की tube इसमें नजर आ रही होगी image में. So the focus overall in the design theme is कि जब patient यहाँ पे आता है और carer यहाँ पे आता है तो उसको सबसे पहले हम एक welcoming अंदाज में greet करना चाहते हैं, जहाँ पे हम उसको एक मजीद तकलीफ का इजाफा ना करें. We are very clear जी कि जिंदगी हम नहीं दे सकते और शिफा हम नहीं दे सकते. हमारे hospital में the only thing we can provide is care, and this is what we intend to do. So this is about my hospital that I wanted to share. So I would actually request that if there are any questions, I would love to address them. I do not claim that I'll be able to respond to or answer all those, but जो मेरा point of view है वो मैं जरूर share करना चाहूँगा. बहुत शुक्रिया sir. So I have a lot of questions. लेकिन before I go to my questions, let me also remind everyone, अगर आपके ज़हन में questions हैं, you can type them in the Q&A. We'll try to see आप chat box में भी type कर सकते हैं. Better है Q&A में. And if you want microphone and make your comment, you can raise your hand, and we'll try to get to you if we have some time left over at the end. You know, this is very, very impressive. State of the art. You know, I've seen a couple of new hospitals built in US. You know, University of Central Florida was built 2016. Their hospital in Orlando, VA was built around 2015, 2016. And you know what you have built is even better than all these facilities that I've been seeing. So I saw some of the pictures from outside, like in isko andar se dekhe, it's thoroughly impressive. There's so many small things that I can point out that maybe people don't appreciate. You know how much use they have and how much cost they have in doing small things like pneumatic tubes and many other small things that I was noticing. एक और जो बड़ी खूबसूरत चीज़ जो फील हो रही है कि in Pakistan most people want to use maximum utilization of space, तो हर चीज़ बड़ी crowded होती है. And I see that you have been very
ग्रेशियस विद योर स्पेस, एंड वो पाकिस्तान में उसको शायद वो ज़्यादा समझते हैं कि जी वो इसमें तो 2 कमरे आ सकते थे, इसमें तो ये हो सकता था, because they're trying to raise money in every square foot. So this is wonderful. Let me start with a couple of very general, broad questions. Then I have some very specific questions to ask later on. But then, before I go to those specific questions, I will invite my co-panelists, my co-chairs from Merit to make their comments or ask their questions. But before I get to them, let me ask you some very broad questions in general. पाकिस्तान में हमने जो अभी तक देखा है, 2-3 चैलेंजेस जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स ओवरऑल बहुत थोड़े हैं, एंड एनी हॉस्पिटल दैट्स बिल्ड दैट बेड्स कैपेसिटी is very useful, but there is a challenge on how to rapidly expand the bed capacity of Pakistan. The other big challenge, probably even bigger, is nursing shortages. How to have enough nursing care. आप इतनी अच्छी अगर स्पेस तो दे रहे हैं, लेकिन कैन यू ऑफर द सेम लेवल ऑफ नर्सिंग अवेलेबिलिटी? यहाँ पे नर्सिंग का जो रेशो है वो 1:8 या 1:6 बेड्स होता है, हर 6 से 8 बेड के लिए एक नर्स होती है, और आईसीयू में 1:1 नर्सिंग होती है, और स्टेप डाउन में 1:2 और 1:3 नर्सिंग होती है। ट्रेन नर्सिंग पाकिस्तान में बहुत कम है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स बन रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल केयर की ट्रेन नर्सेज नहीं है जो कि आईसीयू रन कर सकें या उसमें काम कर सकें। And then third one, besides nursing and hospital beds, is the challenges of primary care itself. Although doctors are probably the most abundant part of the three, hospital beds and nursing are even shorter, but still there is a challenge of having a primary care. So a lot of time we think about the hospital as the hub, and with spokes of primary care clinics all around it. And trying to then, rather than having every patient come to the hospital, हर कोई patient hospital आने के बजाय, what you do is you open the satellite primary care clinic, handle those primary care issues right there, and only divert what is needed. And you have acute care, urgent care out there, and then so you don't overwhelm your emergencies and overwhelm your hospitals. So what are your general thoughts about these three big challenges, and the role that you're playing, or what else can be done for these three things? दानिश, वेरी राइटली सेड। आपने जो ये 3 इश्यूज बताए हैं, ये वाकई बड़े इश्यूज में से हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज हैं, एंड हम ये क्लेम नहीं करते कि हमें हर इशू का पता है, बट हम ये जरूर क्लेम करते हैं कि हर इशू को हम फेस करने की एक दफा कोशिश जरूर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बात की नंबर ऑफ बेड्स की। सो इन्हीं तीनों को मैं इकट्ठा एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, आपके तीनों कमेंट्स को। पाकिस्तान का मेरे नजदीक, जो मैंने जब से हेल्थ केयर को समझना शुरू किया है जी, मेरे नजदीक सबसे बड़ा जो हेल्थ केयर के अंदर प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों टर्शरी केयर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से टर्शरी केयर के ऊपर इतना ज्यादा लोड आ जाता है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को केटर करते करते प्रॉपर तरीके से केटर नहीं कर पा रहे होते। सेकेंडली, जो एक हॉस्पिटल का बिजनेस प्लान है, उसके अंदर आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको सस्टेन करने के लिए वो होती है आपकी ऑपरेशन थिएटर की फुल कैपेसिटी से और आपके आईसीयू की फुल कैपेसिटी से। आपके पास एक टर्शरी केयर के अंदर जब प्राइमरी और सेकेंडरी ही ज्यादा आता रहेगा तो आपकी वो चीजें फुली यूटिलाइज नहीं होंगी। सो इन दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए यू हैव टू गो इनटू हब एंड स्पोक मॉडल। सो व्हाट आई इंटेंड टू डू इज आई इंटेंड टू बिल्ड स्पोक्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुल्तान, जिसमें क्या डीजी खान आ जाता है, मुजफ्फरगढ़ आ जाता है, लोधरा आ जाता है, लिया आ जाता है, एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसके अंदर हम टेलीमेडिसिन को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे कि जितना भी प्राइमरी और सेकेंडरी तौर पे जितना पेशेंट्स को देखना है उनको वहां से देख लिया जाए, लैब कलेक्शन पॉइंट्स वहां पे हों, प्रॉपर अच्छी मेडिकेशन वहां पे अवेलेबल हो थ्रू फार्मेसीज, जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से ली जाए, रिटेलर वाली फार्मेसी ना हो वहां पे, एक्सपायर्ड मेडिसिन वाला सिनेरियो ना हो। सो हेल्थ केयर को बेहतर तरीके से इन स्पोक्स पे पहुंचाया जाए, और जब उन स्पोक्स में आने वाले मरीजों का किसी भी वजह से उनको टर्शरी केयर की जरूरत होती है तो उनकी वहीं से अलाइनमेंट हो, दे जस्ट हैव टू कम टू दिस प्लेस जहां पे उनको टर्शरी केयर मुहैया की जाए। अब स्पेशली जब दूसरे शहर से लोग आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है जी, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि अगर डीजी खान से कोई ज़ईफ आदमी आते हैं तो सबसे पहले उनको मसला ये होता है कि किसी को मैंने साथ लेकर जाना है। वो किसी को साथ लेकर आते हैं वसाइल के मुताबिक, कोई अपनी गाड़ी पे आता है, कोई वैगन पे आता है, एंड एवरीबॉडी, उनके लिए एक मेन पॉइंट है निश्तर, बिकॉज निश्तर इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट इन सर्दर्न पंजाब, तो पीपल कम ओवर देयर। वहां से अनफॉर्चुनेटली बहुत नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, जहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको मूव करना शुरू कर देते हैं टू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे वांट टू मूव देम, और उसके बाद
लेट्स सपोज अगर वो सही डायरेक्शन में पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अब मैंने रहना कहाँ पे है, मैंने खाना कहाँ पे है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आर मैंडेटरी फॉर अ नॉर्मल लाइफ, अ पेशेंट्स लाइफ एंड द केयरर्स लाइफ एज वेल। सो हमने क्या किया है कि हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर होटल रूम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो वो लोग जो हमारे आउटस्कर्ट से आ रहे होंगे इर्द गिर्द के शहरों से, या इंशाल्लाह इर्द गिर्द के मुल्कों से, कल को अगर पाकिस्तान में हम हेल्थ केयर को अच्छा कर देते हैं तो इंडिया की तरह, सिंगापुर की तरह इर्द गिर्द के मुल्कों से भी लोग आया करेंगे। उनके लिए हम उनको वहीं पे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पे उनको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम मेडिकल टूरिज्म और टेलीमेडिसिन और हब एंड स्पोक तीनों को इकट्ठा करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाले पार्ट को हैंडल करें। सेकेंडली, क्या और अस्पताल बनने की जरूरत है? यस, डेफिनेटली। हमारे जिस तरह का हमने बनाने की कोशिश की है, इससे ज्यादा अच्छे और बहुत सारे अस्पताल बनाने की जरूरत है। बिकॉज इस वक्त निश्तर के अंदर मेरी नॉलेज के मुताबिक 1100 बेड हैं और डेली बेसिस पे 2200 पेशेंट वहां पे होता है। उन पेशेंट्स को प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती। बेशक हॉस्पिटल देना चाहता है, मगर जब आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंट आ जाएं तो आप उनको केटर नहीं कर पाते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड चीज आपने बात की अलाइड सर्विसेज की और स्टाफ की। सो व्हाट वी इंटेंड टू डू इज कि जी हमने ये जो हॉस्पिटल बनाया ना, दिस इज अ 250 बेड हॉस्पिटल। हमारे पास लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है साथ, जिसमें के वी इंटेंड टू बिल्ड अ टीचिंग हॉस्पिटल ओवर देयर, जिसमें वार्ड्स होंगे। और उन वार्ड्स वाले सिनेरियो में आपके 2 फ्लोर के ऊपर 400 बेड इजीली आ जाएंगे। सो विद 650 बेड विल गो विद अ मेडिकल कॉलेज ओवर देयर एज वेल। नाउ देयर आर 2 रीजंस टू गो इनटू दैट डोमेन. Number 1 is to improve the quality. Number 2 is to make this project more sustainable. Because मेडिकल कॉलेज और टीचिंग फैसिलिटीज के साथ जब आपकी होती हैं टीचिंग हॉस्पिटल की, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स आते हैं जो सीनियर लेवल के होते हैं, जो कि वहां पे आके गिव बैक टू द कम्युनिटी करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं। एंड एज फार एज द मेडिकल कॉलेज इज कंसर्न, कब बनाएंगे मुझे अभी नहीं पता, अभी हम इस चीज को कर रहे हैं, बट वी हैव इंशाल्लाह प्लान कि हमने मेडिकल कॉलेज जब बनाना है तो वो मेडिकल कॉलेज भी एक इस लेवल का बनाना है कि प्रॉबेबली पाकिस्तान में एक दूसरा खान मेडिकल कॉलेज होगा। बिकॉज हम जो भी काम करेंगे, हमारी इंटेंशन बहुत सिंपल है कि हमने अच्छे तरीके से और भरपूर तरीके से करना है। लाइकवाइज वी इंटेंड टू बिल्ड allied services school there as well, nursing school there as well. This will be a long journey, but we recognize कि इन चीजों को सही तरीके से करने के लिए आपको ये चीजें प्रोड्यूस भी करनी है। And if we intend to go into chain of hospitals, inshallah, excuse me, उसके लिए यही सारे हमारे नर्सेस और अलाइड सर्विसेज जो स्कूल होंगे, यहीं से हम उन लोगों को जॉब सिक्योरिटी भी देंगे जो हमारे बाकी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर जाके जॉब कर सकेंगे। So these are the 3 areas जिनको कि एड्रेस करने का हम इस तरह कोशिश कर रहे हैं। Now, how much time this will take? Honestly, I don't know, but we are adamant कि हमने ये चीजें करनी है और उनको स्टेप वाइज हैंडल करना है। For now, अभी के लिए जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हम we make sure कि हम उनको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी करें, उनके अंदर एक वैल्यू क्रिएट करें कि वो आ रहे हैं तो कुछ करने के लिए आ रहे हैं, कोई वैल्यू देने के लिए आ रहे हैं। हम जो भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं जी, उनको शुरू में ही ओरिएंटेशन में एक बात ये जरूर क्लियर करते हैं कि अगर आपका मकसद पैसे कमाना है तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू कम। अगर आपका मकसद केयर प्रोवाइड करना है और उससे बाय प्रोडक्ट में पैसे कमाना है तो दिस इज द राइट प्लेस। बिकॉज पैसे आ जाते हैं, वी आर वेरी क्लियर कि रिस्क अल्लाह ताला की जात ने देना है। हमारा काम है अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना। सो वी वांट ऑल आवर टीम शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन और बेस्ट तरीके से काम करें। सो दिस इज द साइकोलॉजिकल acumen that we want in our team, and alhamdulillah you'll be very happy to know कि आम तौर पे हमें लगता है कि इस तरह के लोग बहुत कम हैं, बट दुनिया भरी पड़ी है इस तरह के लोगों से। गालिबन बुराई थोड़ी सी होती है तो नजर ज्यादा आती है, अच्छाई बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस में काम करना चाहते हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे 60% इत्तेफाक से जो कंसल्टेंट्स हैं वो लोग हैं जिनके पास फॉरेन एक्सपोजर है। दे वांट टू वर्क विद एन इंस्टीट्यूशन, सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट इंस्टीट्यूशन। बहुत बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सो आई हैव 2 other broad questions before I go to one of my co-chair. Maybe agar Shahid bhai is available after this question, I can start with him. I think he is also rounding but listening in. But before I cue in Dr. Shahid, 2 other broad question. एक आपने हल्का सा उसको टच किया, उसको थोड़ा सा अगर आप और एक्सपेंड करें, और एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ
एक तो आपने टेली मेडिसिन का जिक्र किया, आप भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपने स्पोक मॉडल के साथ। हाउ डू यू सी इट ग्रोइंग? बहुत सारी टेली मेडिसिन कंपनियां खुल रही हैं, सेहत कहानी है, मरम है, दवाई.com है, ओला डॉक है, मेड आई क्यू है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में। हाउ डू यू सी योर सेल्फ? इज देयर एनी पोटेंशियल रोल or integration, or do you want to have a presence like that, or collaborate with some of those? और collaboration से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा मॉडल ये हुआ, इफेक्टिव मॉडल बड़े बड़े शहरों में अमेरिका में, which was the to develop a network of providers। जैसे मैं पहले नेब्रास्का में था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का did contract with 7-8 large hospitals, which were secondary care. We were tertiary care, they were secondary care. So Methodist Hospital and Norfolk Hospital, this hospital. And then they also went ahead and did kind of contracts with primary care providers, जो 5-5, 10 का ग्रुप बैठा हुआ है कहीं पे, practices जिनको कहते हैं बाज़-औक़ात, बैठी हुई है उनकी ईस्ट प्रैक्टिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, उनको हॉस्पिटल प्रिविलेजेस भी दे दिए, एडमिटिंग प्रिविलेजेस भी दे दिए, और जस्ट टू हैव काइंड ऑफ कोलैबोरेशन कि आपने डिस्चार्ज किया तो फॉलो फलां क्लिनिक में हो जाएगा जो कि किसी और का प्राइवेट क्लिनिक है, एंड दे एडमिट टू यू इफ दे नीड टू एडमिट और सेंड यू टू द लैब्स। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग आई सी मिसिंग कि पाकिस्तान में एक कोलैबोरेशन की वो सेंस नहीं नजर आती जो यहाँ पे हमें फील होती है कि जो है ना प्राइवेट जो कंपनियां शुरू हो रही हैं उनके साथ नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार होता, वो कहते हैं हम अपनी खोल लेंगे एक ब्रांच है, हम अपना एक बना लेंगे। और डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी, और डू यू सी दिस इज गोना ऑलवेज बी अ चैलेंज टू क्रिएट नेटवर्क्स लाइक दैट? दानिश, आई बिलीव कि कोलैबोरेशन के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि सब कुछ कर सकता है, और मुझे भी कोई गलत फहमी नहीं है और मुझे कोई खुशफहमी भी नहीं है कि ये आज जिस हॉस्पिटल को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मैंने बनाया, ये मैंने नहीं बनाया। इसके अंदर बहुत सारी टीम शामिल हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसके अंदर बहुत सारे ब्रेन्स शामिल हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, डिज़ाइन कंसल्टेंट्स हैं, मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं, हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स हैं, बिल्डिंग कंसल्टेंट्स हैं। सो लाइकवाइज आगे भी जब हमने इससे आगे जाना है, आई एम टॉकिंग अबाउट हब एंड स्पोक मॉडल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीमेडिसिन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल टूरिज्म एंड मेडिकल कॉन्सियर्ज सर्विसेज, ये सब की सब चीजें कोलैबोरेशंस के साथ काम करेंगी। नाउ अब कोलैबोरेशन में इशू क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये जो हमने एक हॉस्पिटल बनाया है, इस हॉस्पिटल के अंदर आई हैड अ पॉसिबिलिटी कि मैं पैथोलॉजी किसी को आउटसोर्स कर दूं, आई हैड दिस ऑप्शन कि मैं रेडियोलॉजी किसी को आउटसोर्स कर दूं। That is also a form of collaboration that you can have in a hospital. But we decided this is something that we are not going to do. We have reasons for that. Because we do not want any sort of kickbacks or referrals coming into the system. So what we intend to do is, we intend to have collaborations with organizations who are doing such thing. For example, I'm already in talks with the company here in Pakistan who wants to work in primary and secondary sector. So if they are building primary and secondary care places, I don't have to build that. We just need to form a consortium. Idea is not to just multiply money. Money will come back. Idea is to provide some sort of quality health care, to provide value. वैल्यू किसी किस्म की कोलैबोरेशन से हो वो हम जरूर करना चाहेंगे, बट ऑफ कोर्स हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि कोलैबोरेटर्स के एथिक्स और वैल्यूज क्या हैं। बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। कोई एक चीज जब शुरू होती है तो तमाम लोग भेड़ चाल में उसी में लग जाते हैं, एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग। इससे बहुत से अच्छे लोग भी इंट्रोड्यूस होते हैं। टेलीमेडिसिन में भी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, इंशाल्लाह इनमें से जो सस्टेनेबल होंगी और जो ग्रोथ इनेबल्ड होंगी वो वहां पे रुक जाएंगी। सो वी वुड वांट टू हैव कोलैबोरेशन विद सच कंपनीज जहां पे हम इन चीजों को आगे लेकर चलें। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड अ वर्ड विद GE फाइनेंसिंग एंड CDC UK, सो आई इंटेंड टू वर्क विद सच ग्रुप्स एज वेल, जहां पे इफ दे फील दैट वी हैव डिलीवर्ड अ गुड प्रोजेक्ट, वन प्रोजेक्ट जो कि जिसकी कोई वर्थ है और ये वैल्यू दे सकता है, एंड इफ somebody else wants to come and wants to combine it with their chain of hospitals, तो why not? If primary and secondary care किसी और नाम से आता है और वो collaboration में हम जाते हैं, why not? मैं तो यहाँ तक इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि we should actually start working amongst the hospitals in collaboration as well. अभी तक हॉस्पिटल्स के बीच में जो कोलैबोरेशन होती है, अनफॉर्चुनेटली वो मोस्टली रेवेन्यू की बेस पे होती है कि अगर हम आपको पेशेंट देंगे तो हमें आप इतना रेफरल देंगे। आई एम नॉट विलिंग टू टेक रेफरल फॉर एनीथिंग। इफ आई डोंट हैव अ फैसिलिटी, आई वांट टू हैव दैट रिलेशनशिप विद दैट हॉस्पिटल जहां पे मैं उस पेशेंट को वहां कन्वीनियंटली पहुंचा सकूं।
मुझे उसके लिए कोई किकबैक नहीं चाहिए, कोई रेफरल नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम है सर्विस को प्रोवाइड करना, सर्विस को एक्सेसिबल बनाना उस पेशेंट के लिए। सो उसमें कोलैबोरेशंस तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी एक जमाने में शौकत खानम से बात हुई और मैंने उनसे ये कहा कि आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं, उन पेशेंट्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्क्रीनिंग के बाद आप एक्सेप्ट नहीं करते ड्यू टू XYZ रीजंस। शायद उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि आपको लगता है कि फोकस उन पे करना चाहिए जिसके ऊपर कोई रिजल्ट आएगा। So in that scenario, I offered them कि why not have your screening place at my premises? I don't want any revenue share in that. Have a screening place so that आपके पास जब लोग स्क्रीन होके आए तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पे क्वालिटी दे सकें। And it is not only me. I believe कि तमाम हेल्थ केयर को ये करना चाहिए। People don't understand when you give such services, आपकी कमाई डेफिनेटली होती है। अगर आपने कमाई को अपना प्राइम जोन बना लिया तो देन यू आर डूम्ड। वेयर एज अगर कमाई जो है, जो रेवेन्यू है, आपका आउटकम है, वन ऑफ द आउटकम्स, देन यू जस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस। सो दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू। एंड यस, कोलैबोरेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वी आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद मेनी अदर कंपनीज। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। So I have some few focus questions, but I'll go to that later. And I see some questions coming up in chat and Q&A box. Before all of that, let me invite my co-chair, Dr. Shahid Rafiq, for any of his questions or comment. You know, Shahid has much more interest in healthcare delivery in Pakistan than I do. I much more focus on education side of things and technology, but Shahid has always been focused on how to improve the healthcare delivery in Pakistan. So, Shahid bhai, over to you. Thank you, Danish. I really enjoyed this talk, and I'm very impressed. Not only, I think, जिस तरह दानिश ने कहा building and उसकी जो space है, I think we very few people understand this. I think Yasir mentioned that in the beginning, that जो एक welcoming atmosphere है patients का, जब वो एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में आते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्पेस है, जो आपकी, चाहे वो रिसेप्शन है और वेटिंग एरिया है, इवन एग्जाम रूम्स, अगर वो बहुत छोटे हों 10 by 10, तो इट सीम्स वेरी कंजेस्टेड। अगर वो थोड़े बड़े हों, हाई सीलिंग हो, तो वो ज्यादा, ये स्पेशियस जो स्पेशल ओरिएंटेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फ्यू पीपल acknowledge or understand कि patient well-being and patient treatment is also making them more comfortable, feel them welcome, and making them very warm and fuzzy at that point. तो मैं खुद अपने यहाँ पे ऑफिस में, बल्कि इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि यहाँ पे मेरा, जब मैंने ऑफिस अपना शुरू किया, तो मुझे ये था कि जो ऑफिस, जो मेरा जो डॉक्टर ऑफिस है, why does it always have to look like a clinic? Why can't it look like more like a welcoming drawing roomish atmosphere? तो मुझे जो है ना, वो मैंने अपना ऑफिस ऐसे बनाया, और जो मैं देख रहा था कि इसमें जो पैरेट ग्रीन कलर है, ये हमारा ऑफिस का कलर है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक मुल्तान के एक उसमें भी वही हमारा जो मैरीलैंड से एक लिंक मुझे लगा। तो खैर वो चीजें, तो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यासिर ऑन ऑल द थिंग्स अकम्प्लिश्ड, बट मोर देन दैट, आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट योर अप्रोच and thought process. It's very clear, it's very pertinent, it's very right, as much as I understand in the past 10-14 years working from here with thinking or trying to see how the healthcare challenges and situation and problems in Pakistan. Obviously you are doing much better than us, because we cannot do what you have done because of the distance, and we are here, but we try to collaborate. And so your thought process of collaborating between the healthcare facilities, between the healthcare groups, between the healthcare entities, and probably physicians and APPNA Merit, I think that's all really, really good. I think you're on target in terms of
when you make such a, I think this hospital is the main thing that you have already built, and then the medical college and allied facilities follow. And also I wanted to congratulate you on the thought process, which is my thought process always, that money follows excellence. तो जैसे आपने कहा कि जब आप collaborate करते हैं और service oriented आपकी approach होती है, then you know, money follows that. The business follows that. So I think all of the things that you said is very close to my heart, and I know Danish and other and APPNA Merit and Tajdeed, we are very focused on that. कि अगर हम कोई चीज create करें या किसी चीज में contribute करें या collaborate करें, it should have a value. We do not want to do anything just for the sake of money. Alhamdulillah, मतलब यहाँ पे we are good. We made our things. Now we are trying to see where we can make a difference, whether it is in a new innovative, you know, medical device, or maybe pharma, or maybe in health service delivery, or whatever way there is an innovation where we can contribute or collaborate. I think that's where we are. In APPNA Merit, we are more focused on education, but in Tajdeed, we are more focused on even investments and only in healthcare, innovative projects. And I think you have shown by achieving something. I think that track record is very important, because ideas, a lot of people have ideas, but I think execution of that idea is very important. So all that is really great. My question also is that in Pakistan or other places, we have seen that, you know, once the building is very good, everything is, you know, neat and clean, but after a while it deteriorates for various reasons. So what is your plan, or why do you think that is the case in Pakistan? And what is your plan to continue it being clean and neat and nice and as you have conceived it? Right. So, sir, thank you so much for the appreciation. इसमें दो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जी. पहली चीज तो ये है कि what we are doing to ensure कि हम इसको maintain कर पाएं. वो हम ये कर रहे हैं कि जो हमने अपना हायरार्की बनाई है, जो ऑर्गेनोग्राम बनाया है, उसके अंदर आई एम वर्किंग एज अ सीईओ फॉर नाउ. आई डोंट इंटेंड टू बी अ सीईओ फॉर लाइफ, बिकॉज आई बिलीव कि मुझे इसको आगे लेकर चलना है. सो वंस आई अंडरस्टैंड द होल main dilemma and main things of this thing, I'll move on inshallah. But CEO को हमने रिपोर्ट कराया है 2 लोगों को, जिसमें कि बाकी सारे लोग तो रिपोर्ट कर रहे हैं. मेडिकल डायरेक्टर हो गया, फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, ऑपरेशन का डायरेक्टर हो गया, नर्सिंग का डायरेक्टर हो गया, मगर 2 की पोजीशंस हैं, एक इंटरनल ऑडिट की और एक है क्वालिटी की. ये जो क्वालिटी और ऑडिट के लोग होंगे ना, they will be auditing and checking the quality of the medical director's domain, nursing director's domain and operations director's domain. So इनका primarily काम ये होगा कि इन्होंने ये ensure करना है कि 3 main positions अपने काम ठीक कर रही हैं. Number 1. Number 2, हमारा जो हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है, उस हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट पर नजर रखने के लिए हमने एक और छोटा सा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसका कि बड़ा सिंपल सा एक ये काम है कि एवरी डे ही और शी हैज टू विजिट द होल हॉस्पिटल, और जहां पे उसको कोई भी चीज मेंटेनेंस से हटी हुई नजर आती है, कोई जगह चिप ऑफ हुई है, कहीं पे कोई दाग लगा हुआ है, कहीं पे कोई जगह साफ नहीं है, कहीं पे किसी वॉशरूम के अंदर पानी खड़ा हुआ है, कहीं पे कोई लीकेज हो रहा है, तो वो देयर एंड देन लाइव वहां पे ट्रांसमिट हो रहा होता है. एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, एंड वी मेक श्योर कि हमारा SLA ये है कि विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम एवरीथिंग नीड्स टू बी सॉर्टेड. बहुत सारी चीजें तो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हो जाती हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है. सो वी ट्राई कि हम जो चीजें बनाई हैं इनको मेंटेन कर पाएं, बिकॉज वी बिलीव के क्लास में फर्स्ट आना मुश्किल नहीं होता जी, फर्स्ट आते रहना मुश्किल होता है. सो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम फर्स्ट आते रहें, और उसके लिए हमें ये मेंटेनेंस करनी ही पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर. बट येट अगेन वी आर वेरी क्लियर कि बिल्डिंग और मेंटेनेंस और ये सारा कुछ जो है, दिस इज जस्ट द 30% ऑफ द होल एम्बिट जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इज द नेक्स्ट कोर्स. जब हमने जितनी बातें हम कर रहे हैं कि हम हेल्थ केयर और क्वालिटी को बेहतर तरीके से करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पार्ट.
So we are more geared and more focused towards the operations and medical side कि हम अपने excuse me HMIS को इस तरीके से इंटीग्रेट करें हर चीज के साथ कि फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए टू कस्टमर जो कि पेशेंट है हमारा, टू केयरर एंड टू द स्टाफ. सो इन सब चीजों को मेंटेन करना है. कुछ चीजें मेंटेनेंस की वो हैं जो नजर आएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती. फॉर एग्जांपल आपके जो बैक एंड में सिस्टम चल रहे हैं, हमारा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंश्योर करता है पूरी बिल्डिंग की कूलिंग को, जो इंश्योर करता है पूरी बिल्डिंग की लाइटिंग को, और इंश्योर करता है कि आपका जो यूटिलिटी एक्सपेंस है वो मैनेज रहे. नॉट बेस्ड ऑन दिस थिंग कि जी बिजली का बिल ज्यादा आया है तो बत्तियां बंद कर दो. बेस्ड ऑन दिस थिंग कि किस एरिया में जरूरत है और किस एरिया में नहीं है. सो इट्स अ सेंसर बेस्ड सिस्टम जो कि हमने बिल्डिंग में लगाया है. देन देयर इज अ नर्स कॉल सिस्टम. नर्स कॉल सिस्टम के भी फिर केपीआईज हैं कि अगर एक पेशेंट ने नर्स कॉल के बटन को दबाया है तो कितनी देर के बाद नर्स वहां पे पहुंची और उसने उस बटन को ऑफ किया है. दिस इज बीइंग रिपोर्टेड एट द बैक एंड. सो मेंटेनेंस में हमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को मेंटेनेंस नहीं करना, हमें तमाम एसओपीज को भी मेंटेन करना है. सो वी आर गेयर्ड अप कि इंशाल्लाह ये सारी चीजें हमने करनी है. सो लेट्स होप जी, लेट्स सी कि कितना कर पाते हैं इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. Meanwhile, Dr. Saeed Uzair is co-chair with me for this committee that organizes these webinars on health innovation entrepreneur and really a dynamic force in entrepreneurship in healthcare. Ji Uzair. Thank you very much, Danish. Yasir, thank you very much. I think you have full command on whatever you are looking and whatever you are delivering. I have some interesting question. I understand the revenue cycle and the sustainability model for the healthcare delivery system. So my first question is, as per your business plan, when do you see the hospital is going into green? That's the first question, in terms of number of years, or maybe you have some other parameter. The second thing is, one of the biggest issue in Pakistan is the what we call it, the supply chain management, because most of the things those are imported, और लैब या कोई चीज भी जो आपका सिस्टम है वो डिपेंडेंट होता है ऑन कंज्यूमेबल एंड सस्टेनेबल सप्लाई. तो जनरली दीज आर द बिग चैलेंजेस, पर्टिकुलरली जिस तरह एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है, सडनली द वेंडर दे स्टॉप इंपोर्टिंग द थिंग्स, देन दैट्स अ बिग चैलेंज. थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जनरली देखें, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज है देयर आर प्लेंटी, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर की सप्लाई कोई इशू नहीं है. अलाइड सर्विसेज जो है वो बिग इशू है. तो आपने जो ऑर्डर बयान किया है कि मेडिकल कॉलेज पहले और अलाइड सर्विसेज, अगर मैं सही समझा हूँ बाद में, तो क्या ये ऑर्डर इन रिवर्स नहीं होना चाहिए? एक चीज. और दूसरी चीज ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे कंसल्टेंट हैं, ट्रेनिंग अच्छी होगी मेडिकल कॉलेज में, तो मेरा ख्याल ये है कि कॉलेज की हद तक एज सच अगर आप एक प्रोफेशनल कॉलेज चलाएं तो वो कोई कमर्शियली बहुत वायबल अब मॉडल नहीं रहा. चौथा सवाल ये है कि आपने आगा खान के साथ बेंचमार्क किया. आगा खान को बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं एट दैट पॉइंट इन टाइम. फॉर एग्जांपल उनकी इंपोर्ट टैक्स जो है टैक्स फ्री है. दे आर मेनी मोर इंसेंटिव्स. तो डू यू सी दैट कुछ गवर्नमेंट से भी कि अगर एक अच्छा क्वालिटी का कोई हॉस्पिटल बनाता है, टू लुक फॉर some of these incentives or something like that? Sorry, मेरे question कुछ ज़्यादा ही हो गए. I'm sorry for that, but I think the wonderful. You have a wonderful. सर थैंक यू सो मच. मुझे आई एम सॉरी सारे क्वेश्चंस आपके याद नहीं है. मुझे जो जो याद है मैं वन बाय वन उनको एक्सप्रेस करता हूँ. काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा जो मैं मिस कर गया हूँ. नंबर वन, यस यू आर राइट. जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया नहीं, वो सीक्वेंस नहीं है. सो व्हाट आई शेयर्ड वाज कि हम टीचिंग हॉस्पिटल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और अलाइड सर्विसेज भी बनाएंगे. इंशाल्लाह हम अलाइड सर्विसेज में पहले जाएंगे. उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है कि उन अलाइड सर्विसेज को बनाना और चलाना कॉस्ट हैवी नहीं है. जो मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट हैवी है. तो वो हम लेटर ऑन करेंगे जब हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे. दूसरा सर, मुझे आपका जो क्वेश्चन याद है वो ये याद है कि आपने मेरे से पूछा कि हमारा पे बैक पीरियड क्या है और हमारा ब्रेक इवन क्या है. सर एज पर द फिजिबिलिटी हमारा जो ब्रेक इवन है वो 3 साल है और हमारा पे बैक पीरियड जो है वो 7 साल है. बट इंशाल्लाह माय इंटरनल टारगेट इज कि मुझे 1.5 साल में ब्रेक इवन करना है. कैसे करते हैं, लेट्स सी. नाउ व्हेन आई से कि मुझे 1.5 साल में करना है, आई एम वेरी क्लियर एंड आई फ्रीक्वेंटली हैव मीटिंग्स विद डिफरेंट कंसल्टेंट्स जो कि ऑन बोर्ड हैं, एंड आई टेल देम वेरी क्लियरली कि वी एज अ हॉस्पिटल आर नेवर एवर गोइंग टू आस्क यू कि आपके पेशेंट्स क्यों कम है.
We are not going to ask you that. Because पेशेंट लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पेशेंट लाना हमारी जिम्मेदारी है. हम आपसे जो पूछेंगे वो सिर्फ ये पूछेंगे कि आपकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्यों गिर रहा है, आपका फीडबैक नीचे क्यों आ रहा है. सो दिस इज द ओनली थिंग वी आर गोना आस्क. सो पेशेंट्स को उस जगह पर लेकर आना, उसके लिए मार्केटिंग करना, लोगों को इस चीज की अवेयरनेस देना कि किस किस मर्ज का यहाँ पे इलाज है, वो सारा हमारा काम है. लाइकवाइज जो हमारा फोकस है वो इसके ऊपर नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेशन करें और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस करें और ज्यादा से ज्यादा हम आईसीयू में लोगों को लेकर जाएं. हमारी तो बड़ी सिंपल सी ये ख्वाहिश ये है जी कि, और ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि कोई अपने कारोबार में इस तरह की बात करे, बट ऑनेस्टली मैं तो ये चाहूंगा कि इस अस्पताल की कभी किसी को जरूरत ना पड़े. मगर हम ये सब जानते हैं कि जिंदगी की जो आजमाइशें हैं उनके अंदर ये एक फैक्चुअल चीज है कि सेहत में उतार चढ़ाव आता है. सो जब किसी की सेहत में उतार चढ़ाव आएगा, हम ये चाहेंगे कि उसके पास एक ऑप्शन ये भी हो जहां पे अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं. ये बनाने से पहले हमने पहली चीज ये जरूर सोची थी और मेरे जहन में ये है कि क्या अगर कल को मुझे अपनी सेहत का मसला हो तो मैं इस हॉस्पिटल में जाऊंगा. अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैंने सही चीज बनाई है. सो दैट्स द पार्ट जो कि हम बात कर रहे हैं कि हम पे बैक कितने अरसे में देख रहे हैं. हमारे नजदीक जो पे बैक है जी, शुरू के काफी सारे महीने में हमें लॉस रहेगा, मगर उन महीनों के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे होंगे सर्विसेज के ऊपर. और ये इसका ग्राफ जो है ना जी ग्रोथ का, वो आपका ग्रोथ का ग्राफ यूं जाता है. जब आप सर्विसेज अच्छी देते रहते हैं बहुत अरसे तक, तो एक टाइम आता है जब वर्ड ऑफ माउथ से ये बात बहुत ज्यादा फैलती है, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द मार्केटिंग हिट्स. उस वक्त लोग आना शुरू करते हैं, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग रेवेन्यू. सो दिस इज हाउ वी इंटेंड टू डू इट. कितना कर पाएंगे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बट कोशिश ये है कि इसको करें. सर इसके अलावा आपका सवाल क्या था? जी, मेरा ये था कि जो सप्लाई चेन है आपकी, क्योंकि सर्विस डिलीवरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन, और जो वेंडर हैं मोस्टली इनपुट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेड हैं, तो उसकी क्वालिटी मैनेज करना और उसकी फराहमी को मुसलसल यकीनी बनाना, दीज आर टू बिग चैलेंजेस, क्योंकि यू कैन ओनली डिलीवर व्हेन यू हैव द बैकअप सिस्टम इन प्लेस. तो मटेरियल मैनेजमेंट और सप्लाई चेन, सो हाउ डू यू, व्हाट आर योर प्लान्स ऑन दैट? एक तो हम ये कर रहे हैं कि हम स्मार्ट स्टोरेज पे जा रहे हैं. हमारे पास इन्वेंट्री के बहुत बड़े बड़े हमने हॉल्स नहीं बनाए हुए हॉस्पिटल में. हम फ्रीक्वेंट एंड स्मार्ट स्टोरिंग को बिलीव करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फ्रेश कंटेंट हो, जितना हमें जरूरत है उससे कुछ परसेंट हम ज्यादा रखते हैं. हमारी रीऑर्डरिंग भी ऑटोमेटिक है कि जब इतने परसेंट स्टॉक में कमी हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर खुद ही प्लेस हो जाएगा. हाउएवर, जब इस किस्म के सिनेरियो आते हैं जहां पे आपको जो कंज्यूमेबल्स हैं वो चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल लैब के सिलसिले में बात करते हैं, हमने एक लैब का कोई टेस्ट के सेट्स लिए जिसमें से अगर एक को हम खोल लेते हैं तो उसको विद इन 7 days हमें यूज करना है. अगर हम नहीं करते तो हमारी जाया हो जाती है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर गोइंग इन अ प्लान्ड मैनर, जहां पे ऐसे टेस्ट जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उनको हम इनिशियली आउटसोर्स कर रहे हैं बैक एंड पे, क्योंकि कोई भी लैब तमाम टेस्ट खुद नहीं कर सकती है. बट जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी हम उनको इन दी हॉस्पिटल करना शुरू कर देंगे. उसकी जो स्पेस है, उसकी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, BSL लेवल 2 पे हमने अपनी लैब बनाई है, वो हमने सारी शुरू में पूरी कर ली है. जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी हम वो एरियाज ऐड करते जाएंगे. अभी हमने बेसिक इक्विपमेंट लिया है लैब का, जो सबसे ज्यादा जिनके टेस्ट और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. जहां तक बात है कंज्यूमेबल्स की, उसके अंदर consumables में we believe कि relationship with the providers is very important. So we build relationship with the vendors. We are trying to build that. हर किसी के relationship होते हैं, but we are also trying to build that ताकि हमें time पे conveniently चीज provide कर दी जाए. Thirdly, जब किसी किस्म की कोई चीज किसी बड़ी वजह से हमारे मुल्क में नहीं आ रही, तो वो नहीं आ रही, then we can't do anything. फिर हमें नेमुल बदल की तरफ जाना है कि what is the best possible scenario जो कि किया जा सकता है. So this is how we intend to do it. Let me invite Professor Babar Rao, co-chair for Merit, and Babar was the chair before Shayad, so he's kind of the grandfather chair for APPNA Merit. And Babar wears many hats. He's also one of the original entrepreneurs among us. He's also founder, innovator. He has his own EMR that he has built over a few years and is using in practice, and also advises many other entrepreneurs. So, Baba. Yeah, I'm actually very happy that he's doing work. I was born in a small village outside Kabirwala, so I'm from the area.
So, you're doing a good work. But honestly, as Danish said, I have not seen many new hospitals as good as your hospital in United States. So this is a very good start. Other than that, how we think we may get involved with your services or your plan. Our most Danish guy is Danish, so he'll decide. But I'm really happy for what you are doing. I have no questions. Yeah. Thank you. Let me invite Professor Sarwat Hussain. So Professor Saab, he's the co-chair for APPNA Merit and chair for the artificial intelligence. So I think we lost Yasir Sahib. Ji. Assalamu alaikum, everyone. Sarwat bhai, I think our speaker dropped for a minute. So let's see if he can join back before. Maybe he knew what I was going to ask him. मेरा actually सवाल general है कि it's obviously very, very impressive, and I grew up in Khanewal, which is close to Kabirwala and close to Multan, of course. Went to high school there. So this region is very, and along with Dr. Babar Rao, very close to me, my heart. My question actually is, what is the ask in this presentation? Obviously, it's extremely informative and very, gracious presentation, and very proud of this being happening in Pakistan. Lekin, is there an ask or is it only informational? Am I supposed to respond to it? You don't have to, Yasir. If you have something, sure. So Sarwat Saab, this was an invited presentation from me. So there was no specific need or reach out. But of course, we will explore collaboration. So I have some thoughts. Yasir, I'm going to list a few things. You don't have to write them down. I will send them to you in email. But I'm going to quickly go through a few ideas of things that we could potentially collaborate on. And have more conversations later on. So I think one of the things that I think would be useful that I would love to do is I see a lot of Pakistani physicians now trying to go back to Pakistan or set up practices there or set up projects there. I met a group of hospitalists who are trying to build a state-of-the-art primary care center in Lahore. And again, a network of primary care providers. I also met another group from Toronto who's trying to build radiology and other services in Pakistan. So there are many such groups of APPNA members who are trying to go back, and I think it will be useful for them to connect with you and look at things that could be mutually beneficial. Another thing that could be useful is that we are trying to develop these educational programs, more like continuing professional development for physicians, for nurses, some leadership development, also bringing in some new technology understanding in Pakistan. So that will be another thing that we could discuss more on. I'm not sure if you can hear me. Your screen seemed paused. So before I go on, let me confirm that you're able to hear me. Danish, can you hear me? Ji, I can hear you, but I think your screen looked paused. So I was just making sure. Can you hear me okay? Ji, I can hear you now, but your screen is also not moving. Okay. So yeah, I was just going through a few things that we could discuss later on. It's running late today, so we may not touch on everything. But I was just listing a few things. I would love to talk to you about another thing that we could do. We have done before, where we do skill development for a team. So, for example, to give you an example, Lady Reading Hospital, when they built their ICU, they didn't have any trained intensivists. So what we did was, APPNA did in Merit, was that we had a bunch of intensivists here who started going there and also doing some online rounds and started training their primary care internists as intensivists over 2 years. So it was a 18 months, 2-year-long project. And so we have done something similar in neurology. For example, we've done some stroke training in neurology, and then we are open to do, we have teams to do it in other areas too.
to go and either personally go or blend it with online education and teaching to do some skill development in particular area. So if you start a new ICU, you need some nurses trained or you need doctors trained. We have done that before and we would love to talk more about it. We also have a strong passion about stroke service in Pakistan. I think after cardiovascular risk, the next big risk in Pakistan that is under addressed after MI is stroke, acute stroke. So, but stroke treatments are coming, but still stroke centers and stroke treatments are not widely available. Especially, I don't know if Multan has any good stroke center available locally, but that will be very useful. Otherwise, Lahore is too far to go for any stroke, acute stroke management. So that will be something we can talk more about. We're setting up stroke centers, we're setting up stroke registry, we're setting up some stroke training, intervention, and we can talk more about it. Another thing that we would love to talk to you about is that we are trying to support and advise and invest in healthcare startups in Pakistan. And some of those startups are very unique and very powerful. For example, there is this startup Bionics, which is working on peritoneal dialysis machine, a completely new machine, which doesn't even exist in US and Europe. There are many telehealth startups. There are AI, artificial intelligence startup, and machine learning. We're talking with a group in NUST on brainwave recording for seizures and for neurology, and some startup projects in there in AI. So I would love to also talk to you more about how can we utilize or develop collaboration, where are the synergies and what would be useful to have. Maybe this place could be known for innovation in healthcare also, in addition to providing healthcare. And then lastly, I would say that Shahid especially had a big interest in education for allied services. We're looking at how can we improve or enhance nurse education, but also technicians. So for example, neurology technicians and radiology technicians, sleep technicians, and things like that. So we would also love to collaborate with you and partner with you and have more conversations on those regards. So those were a few of the thoughts that immediately came to my mind, things that would be worth following up on later on. That's Let me great. take any feedback you have before I see a hand raised by Professor Sarwar. Actually, I'm not able to enable my video, first of all. It says that the host has stopped it. So yeah, now I can. Okay. So yes, sure, Danish, जरूर ये सारी चीजें जो हैं, we would love to be part of those things. Anything जहाँ पे collaboratively हम मजीद value दे सकें, I would love to do that. There are many questions that are coming over here. Would you want me to respond to those, or would you want to highlight those? I think one common thing that might be worth addressing a little bit is some of these questions have this common theme of when you bring in these kind of state-of-the-art and good facilities, does that leads to increased expense for healthcare for the patient? Do you have any sense of healthcare economics, and is it cheaper to just build some sketchy kind of facilities and offer cheap health to Pakistan, or is there a model where you can build these kind of good, well-equipped facilities and still provide a cost-effective healthcare delivery to people in Pakistan? देखिए, मेरा ये ख्याल है जी, जिस चीज़ पे हम भी काम कर रहे हैं वो ये है कि क्या हम हेल्थ केयर चीप तरीके से प्रोवाइड करेंगे? नहीं, हम नहीं कर सकते, बिकॉज एक स्पेसिफिक कॉस्ट है किसी चीज़ की, वो तो लगनी है। मगर हम इसकी रिलेटिवली और कंपैरेटिवली कम प्राइस में दे सकते हैं। हाँ, हम दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को कम करके। सो दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू। एक सवाल बार बार डिफरेंट लोग कर रहे हैं कि जी ये बहुत महंगा हॉस्पिटल होगा। इस वक्त मुल्तान में जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेट मी अश्योर यू कि हमारी प्राइस उनसे कम होगी। सो दैट कैन एक्चुअली एक्सप्लेन टू यू कि हमारा मकसद क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, और उस क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड करते हुए डेफिनेटली हमें सस्टेनेबल अर्निंग भी करनी है, बट हम प्रॉफिट मार्जिन को अननेसेसरली बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते। सो दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू, एंड अभी जो हमने अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और मॉडलिंग बनाई हुई है उसके अंदर वी हैव सीन दिस कि दिस बेस्ड ऑन दिस द प्रोजेक्ट कैन बिकम सस्टेनेबल। बिल्कुल सही। प्रोफेसर सरवत, योर हैंड इज रेज्ड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? So I'm not sure if Sarwat by any question. So we're almost 15 minutes over the mark. So I think we should wrap it up. And Yasir Saab, I will reach out to you for further discussion on some of the points I raised.
maybe have another follow-up meeting with you and your team later on. Ji Sarwat Saab, did you have a question before we wrap it up? नहीं जी, मैं बस सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था. Thank you very much. So let me invite Dr. Uzair to officially close the session for today. Ji Uzair Saab. Thank you very much, Danish. Yasir, thank you very much. What a wonderful presentation. Last एक छोटा सा comment है, because I know this is something like sect or something. Yasir Bucha, लेकिन hospital का नाम A गायब है, Buch है. What does that mean? Is there some special Buch International? So I really could not connect the two things together. So will you clarify? Is it Bucha or Yeah, Buch? sure. मेरी जो caste है जी, that's Bucha. And the Bucha clan comes from this place जहाँ पे हमने Buch Executive Villas बनाया है और Buch International Hospital बनाया है. इस जगह का नाम Buch है. And we Buchas are known from this place that is called Buch. Okay. Thank you very much for clarification. So with this, we are going to close this session. I think it's a very thought-provoking. Or Yasir bhai, you are on top of things. You have full command, whatever you are delivering and what you have envisioned. Thank you very much. We wish you all the best, and we will see what can we do together. And Danish will contact you on that. Thank you very much. And particularly, thank you very much to all the participants for participating, and the management team who is going to manage the webinar. Thank you very much to Waleed and the whole team. Thank you very much, everyone. And Allah Hafiz. Thank you so much for the opportunity. Jazakallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.